We start the class in just 2 minutes. एक दो लोग हैं शायद नहीं आए हैं, वैसे ले दे के आ ही गए. So in just 2 minutes, let me find out a file and then we start the class in 2 minutes. Let me find out the file. So ladies and gentlemen, लास्ट क्लास में हमने अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात किया था. डू वी रिमेम्बर? Yes, sir. Earth is round. It has got a magnetic field which may be considered as having a short bar magnet inside the along the axis or near the axis of the Earth. The magnetic lines of forces emanate from the red pole, enter into the blue pole, and within the Earth, it is supposed to be, or not supposed to be, it is imagined to be, the red pole of the bar magnet of the Earth is towards the South Pole, geographic South Pole, and the blue pole is towards the geographic North Pole. So the lines of forces are coming from the south, going towards the north, and entering into this blue pole. Remember? Picture clear है दिमाग में जो बात कर रहे हैं हम लोग? Are you able to imagine the picture? Yes, sir. Okay. So lines of forces are coming out vertically at the poles. Pole से vertical निकलता है, यहाँ पे आके बराबर होता है, horizontal हो जाता है इक्वेटर पे, and then on the south north pole again it is vertical. So magnetic lines of forces are vertical at the pole and horizontal at the equator. Now we have a comparison. When we say equator, we know there is geographic equator. When we talk about poles, we have geographic north and south pole. But the magnetic poles and the geographic poles are not coinciding. They are little different apart. That means Earth is like this. तो उसमें axis north south axis से थोड़ा हटके है magnetic north and south. So how do we define magnetic pole? How do we define magnetic equator? How do we define magnetic meridians? Yes, somebody please help me. How do you define magnetic pole? We have discussed it already. Krishna Kumar Upadhyay.
Krishna, respond. Yes, sir. How do we define magnetic pole? Say yes or no. चुप मत रहो. बोलो नहीं आता है सर, नहीं समझ में आया, आप बताइए. और यू कैन टेक ए ट्राई कि सर ये होता है, गलत हो सकता है, सही होता है, दैट्स ऑल राइट. इफ यू आर रॉन्ग, नो प्रॉब्लम, दैट्स नॉट अ शेम. इट्स ऑल राइट इफ यू आर रॉन्ग. हम यहाँ बैठे हैं सीखने के लिए ना. यस कृष्णा. कैन यू डिफाइन? No, sir. ओके. गौतम साहब पंडित हैं, गौतम पंडित. Yes, sir. Can you try? How do we define magnetic pole? Hint is there, it will be defined with respect to the magnetic lines of forces. Yes, sir. South pole से sir नॉर्थ पोल में जाके कनेक्ट होता है. साउथ पोल से नॉर्थ पोल में जाके कनेक्ट होता है, बट हम बात कर रहे हैं कि व्हाट इज मैग्नेटिक डाइपोल, सॉरी मैग्नेटिक पोल. अर्थ का मैग्नेटिक पोल कहाँ पे है, कैसे बताएंगे कि यहाँ पे मैग्नेटिक पोल है? हाउ डू वी डिफाइन दैट? नहीं सर. विच इज द, हाँ बोलिए, गो अहेड. यस. यस सर. नहीं पता है सर. नहीं पता. 25 दफा हमने कह लिया कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कम आउट वर्टिकली फ्रॉम द पोल. At the equator it is parallel to the ground and then enter into the pole vertically. So wherever the lines of forces are vertical, that place is pole. Is it okay or not? Yes, sir. Yes, sir. So simple definition, at the place where the lines of forces are magnetic lines of forces of earth are vertical, that is the pole. Then define the equator, magnetic equator. Divyansh. Yes, sir. Where vertical magnetic lines are parallel to the earth. All the points joining where the magnetic lines of forces are parallel to the ground, totally horizontal, those are the points which will be making magnetic equator. Clear हुआ? Simple terms में, where the magnetic lines of forces are vertical, दो जगह पे, साउथ पे निकल रहा है, vertically नॉर्थ में एंटर कर रहा है, vertically those are the north and south poles. And all the points where on the earth the magnetic lines of forces are parallel to the ground, all the places, all that line joining all those points is called magnetic equator. Then what is magnetic meridian? What is magnetic meridian? दिव्या कुमार, चुप मत बैठिए. दिव्या. So the lines joining magnetic north pole and magnetic south pole. प्लस जो ज्योग्राफी के केस में ज्योग्राफिक मेरिडियन में होता है वही उसी तरीके से यहाँ पे होगा. The imaginary lines joining the magnetic north pole and magnetic south poles are called magnetic meridian.
What is variation? लास्ट क्लास में बात किया था. What is variation? So the difference between magnetic north pole and the true north. No, not the difference. Angle between them. Yes, sir. Angle. Okay. Angle between the magnetic meridian and geographic meridian. उसके बीच का angle जो है, that is called variation. When you refer to the chart, the charts are made as per the geographic north-south and geographic meridian. Geographic meridian, geographic latitudes, geographic equator, इनके बेस पे चार्ट बनी होती है. But if you are using magnetic compass for steering, आप 000 करेंगे तो geographic north नहीं पहुंचेंगे. कहाँ पहुंचेंगे? True north, sir. Magnetic north. Magnetic north. Magnetic north पे पहुंचेंगे. Sorry, magnetic north. एग्जैक्टली वहां पे पहुंच जाएंगे. लेकिन आपको पहुंचना है ट्रू नॉर्थ पे, तो क्या करना होगा? जो डिफरेंस है उतना ऐड करना पड़ेगा या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा मैग्नेटिक कंपास से. Deviation, sir. वेरिएशन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. अगर मैग्नेटिक मेरिडियन is towards the east of the true meridian, then the variation is easterly. If the magnetic meridian is towards the west of the meridian, then we call the variation to be westerly. So variation can be westerly or easterly, and it is different at different places. अलग जगह पे अलग अलग लैटिट्यूड्स पे या लॉन्गिट्यूड्स पे वेरिएशन की वैल्यू अलग अलग होती है. तो जब चार्ट हम देखते हैं तो चार्ट में क्लियरली मेंशन्ड होता है कि इस जगह पे इस चार्ट में वेरिएशन इज सो मच. जो चार्ट हमारे पास होती है उसमें कंपास रोज होता है, कुछ नोट्स वगैरह लिखे होते हैं चार्ट्स पे. Yes, sir. Yes, sir. वहां पे वेरिएशन की वैल्यू दी होती है. मतलब कि जब आप मैग्नेटिक कंपास से स्टीयर करेंगे तो वो वेरिएशन जो दिया हुआ है चार्ट में उतना प्लस या माइनस करके तब आप स्टीयर करेंगे. आपको 0 जाना है और वेरिएशन 5 डिग्री ईस्टर्ली है, then you should go 355. Easterly is less, westerly is more. So you have to steer with the compass as 355, then you will reach the true north. कहानी क्लियर हुई अभी तक? Yes, sir. Okay. So we will go to the slides, and from the slides we'll see all these facts once again. एक चीज और जो मैं बताना चाह रहा था, जो आपको नोट भी करना चाहिए, कि magnetic lines of forces, as we have already understood, is horizontal at the equator. Magnetic lines of forces are horizontal at the equator, but as we go here it is vertical. तो यहाँ पे अर्थ के साथ कुछ एंगल बना रहा है या नहीं, और यहाँ पे 0 एंगल हो गया. Yes, sir. यहाँ पे एंगल कितना हो गया अर्थ सरफेस से? 90. 90, sir. फिर यहाँ पे कितना हुआ इक्वेटर पे? 0. और यहाँ पे 180. 180. 180 नहीं, फिर 90 डिग्री. 90. 90 डिग्री है ना? 90, yes, sir. Yes, sir. 190 degree. 90 degree. So the angle that the magnetic lines of forces of the earth are making with the horizontal earth surface के साथ varies from 90 to 0 to 90. This side it is called positive, this side it is called negative 90. So here it is 0, 0, 0. Here it is minus 90,
साउथ पोल पे, एंड हियर इट इज plus 90. plus 90. So if it is 0 here and 90 here, तो बीच में यहाँ पे कुछ ना कुछ तो एंगल बनेगा इस इंटरमीडिएट लैटिट्यूड पे. Yes, sir. Yes, sir. So what is that angle called? इस सरफेस के साथ magnetic lines of forces are making an angle. This angle is called this angle Dip. dip, angle of dip. So with the help of angle of dip, we can define magnetic pole, magnetic equator as well. जो हम लोग कह रहे थे कि where the magnetic lines of forces are vertical and horizontal, उसको हम simply बोल सकते हैं where the angle of dip is 90 degree, that place is Magnetic pole. magnetic pole, and where the angle of dip is 0, Equator. equator. If I have a magnet, like this, and if I suspend it on the equator, it will be like this. If the magnetic lines of forces are like this, and I suspend the magnet, it will be like this here. If I go near the pole where the lines of forces are vertical, like this, the magnet will be aligned like this. So a suspended magnet or magnetic needle will always be in line with the magnetic lines of forces. This will be aligned along with the lines of forces of the earth. So if I have the magnet and if I suspend it at the equator, it will be horizontal. If I suspend it here, how will it be? So vertically facing towards the earth. Yes, the red pole will be facing towards the earth. क्योंकि इस dipole में blue pole is up, red pole is here. So the red pole of the magnet will be like this. So if a suspended needle is there, magnetic needle, it will be horizontal at the equator, at an angle at some intermediate latitude, and vertically downwards, the red pole downwards and north pole, and the same thing, it will be above the ground here and vertically like this with the blue pole here, क्योंकि red pole इसका अर्थ का नीचे है, तो उसका blue pole will be here. So it will be aligning like this all across the earth. Clear हुआ? Was that clear? Yes, sir. All right. So if a magnetic needle is suspended in the northern hemisphere, it will be down like this, making an angle with respect to the horizon. Is that correct? Facing into the earth. We already know that this angle is called angle of dip. Correct? Yes, sir. Yes, sir. So when it is down like this, there is one component, the horizontal component, and there is vertical component. अगर ये T है, total magnetic lines of force का strength है T, तो एक horizontal component होगा जो नॉर्थ की तरफ दिखा रहा है, और एक vertical component होगा इसका जो मैग्नेट को नीचे की तरफ ले जा रहा है. वर्टिकल कंपोनेंट के चलते ये टिल्ट होता है,
और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के चलते ये नॉर्थ की तरफ जाता है. So a magnetic compass needle is pointing towards north only because of horizontal component, which is represented by letter H. So angle of dip इतना है और इसके चलते एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और एक वर्टिकल कंपोनेंट है. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज कॉल्ड H and this is denoted, the vertical component is denoted by yes, denoted by last class में बात किया था letter Z. ठीक है. So remember that the directive property of the compass is because of H. अगर उधर को है नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ, तो ये अलाइन होता है उस तरफ बिकॉज ऑफ H, और ये डाउन जाता है या अप जाता है बिकॉज ऑफ Z. Z. Z की जरूरत नहीं है मुझको बिकॉज इट इज डायरेक्शन फाइंडिंग डिवाइस. So I just want to know where is the north. Z So को तो H, सर खत्म कर देते हैं ना अपन उसको वो करके. Z को यस सर. Z को खत्म नहीं कर सकते, वो तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है. लेकिन जो इसके ऊपर टिल्टिंग इफेक्ट है उसको हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं. अगर उसको अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड नीचे लेके जा रहा है तो मैं कुछ कर सकता हूं कि भाई नीचे नहीं हो, मैं जो दूसरा फोर्स लगा दूं ताकि Z के फोर्स से ज्यादा हो जाए और वो हॉरिजॉन्टल रहे. तो वो हम करते हैं, Z खत्म नहीं करते. Z के पावर को, Z के फैक्टर को हम ओवरकम करते हैं बाय अप्लाइंग ग्रेविटी. हमारा जो कंपास कार्ड का डिजाइन है उस डिजाइन से हम ग्रेविटी को यूज करते हुए ऐसा बनाते हैं ताकि ये डिप ना हो, वो हॉरिजॉन्टल रहे. और हॉरिजॉन्टल में ये डायरेक्शन तो बताया मुझको कि मैग्नेटिक नॉर्थ उधर है, तो लाइन जो मैग्नेटिक निडल होगी वो मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ दिखाएगा. लेकिन जो टिल्टिंग इफेक्ट थी डाउनवर्ड्स या अपवर्ड्स उसको हम ग्रेविटी से न्यूट्रलाइज कर देते हैं. कैसे, वो आगे देखेंगे. So summing up all this understanding once again on the screen of the PPT. Allow me to share the screen, read and see if you are able to follow it. Screen visible? Next, we have already done this slide in the previous class, but repeat it. Here we are saying that within the earth we may consider to be having a short bar magnet. The second part we are talking about that the blue pole is towards the geographic north and the red pole is towards the geographic south pole. Here we are saying that they are not aligned. The magnetic dipole of the earth is not aligned with the geographic axis of the earth, but it is having some angle with it. So magnetic north
and geographic north are not at the same place. There is difference. And also, you must remember that this magnetism of the earth is a dynamic thing. It is changing. The difference between magnetic pole and geographic pole, what is today, was not 100 years back, and it will not be the same next 100 years. It is keeping on changing. तो वेरिएशन आज जो है एक जगह का, आज से 10 साल 15 साल 20 साल बाद वो नहीं रहेगा. जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है अर्थ की वो चेंज हो रहा है. There are various reasons for change which we'll talk about later. So, is this slide clear? दिमाग में पिक्चर बन गया? Yes, sir. Next, अर्थ में मैग्नेटिक डाइपोल, ब्लू पोल टुवर्ड्स नॉर्थ, रेड पोल टुवर्ड्स द साउथ. Lines of forces coming out vertically from south pole, entering into north pole. When entering or vertical, when exiting from the surface of the earth, vertical. At the equator, they are parallel. Study this diagram. Read all points. जो भी लिखा हुआ है सबको पढ़िए and try to make an image in your mind. Also take a look at angle of dip. सर ये एंगल ऑफ टिप फिर से समझा दिया. Come again. Yes, sir. सर एंगल ऑफ टिप फिर से समझा दिया. ये अर्थ का सरफेस है मान लो. नॉर्थ पोल पे magnetic lines of forces are coming vertically down. Is that correct? यस सर. अर्थ का जो इक्वेटर है यहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर पैरेलल टू द ग्राउंड. इज दैट ओके? यस सर. The angle that the magnetic lines of forces are making with respect to ground is called angle of dip. तो इन दोनों ग्रीन लाइन के बीच में कितना एंगल है? जीरो. Zero. So here angle of dip is 0. At this place, the magnetic lines of forces are vertically down. So what is the angle with respect to horizon? The magnetic lines of forces and horizontal. What is the angle? 90. So angle of dip is 90 here, and rather plus 90. If we take the Okay. south pole, angle, the magnetic lines of forces are coming out from the south pole. So what is the Yes, sir. angle here? 90. So this Minus is 90. minus 90. तो ये तो तीन कंडीशन हो गए. पोल पे, इक्वेटर पे, नॉर्थ पोल पे, साउथ पोल पे, इक्वेटर पे. अगर हम अर्थ का एक ये
सरफेस देखें जो ना तो इक्वेटर है ना पोल है, यहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर एट एन एंगल. So here it was 0 degree angle of dip. Here it was 90 degree. Here is there an intermediate value between 0 and 90? इक्वेटर पे 0 डिग्री, पोल पे 90 डिग्री, तो बीच के एरिया में it will be making some angle or not with respect to ground? भाई समझ में नहीं आता है तो बात करो ना, बोलो कि नहीं समझ में आया, फिर से बताऊंगा. सर लेस देन 90 होगा, मोर देन 0 डिग्री होगा. मोर देन 0 होगा, लेस देन 90 होगा ना. यस सर. नहीं समझ में आया? खुल के हाँ बोलो, नहीं सर. समझ में आया. आ गया सर, ये आ गया. तो ये जो है दिस इज गोइंग टुवर्ड्स प्लस. मान लो यहाँ पे प्लस 50 डिग्री या कुछ बन रहा है. जैसे जैसे हम पोल की तरफ बढ़ेंगे तो ये जो एंगल है डिप एंगल वो किसकी तरफ बढ़ेगा? 90. और जैसे जैसे हम इक्वेटर की तरफ बढ़ेंगे तो 0. एग्जैक्टली. दैट मीन्स एट लैटिट्यूड of 90 degree the angle of dip is 90. On equator at 0 degree latitude, magnetic latitude, equator, the angle of dip is 0. What we are trying to say is here again on the screen. Take a look. This is what we are saying. This is the earth. At the poles it is vertical. At the equator it is horizontal. And at this place it is having some kind of angle with respect to ground. This is the angle of dip theta, जो यहाँ पे 0 की तरफ बढ़ेगा और इधर 90 की तरफ बढ़ेगा. आप इसी चीज को उल्टा देख रहे हैं साउथ पोल की तरफ. यहाँ पे 90 डिग्री, ऊपर में भी 90 डिग्री. यहाँ पे अर्थ के सरफेस के साथ what is the angle that it is making? Is it 0? Theta. No sir. Is it 90? No sir. Again, as we go towards the equator, it will proceed towards 0 degree. As we go towards the pole, it will go towards 90 degree. Is it understood? Okay. Yes sir. Clear है हुआ? Yes sir. Good. So अभी और क्लियर होएगा और हम डायग्राम्स देखेंगे और समझ में आएगा. Definitions. मैग्नेटिक पोल किसको बोलते हैं? Tell me when you are happy. Yes, it is okay. Understood. Yes sir. Next. Again, take a look at this diagram.
As you can see, here is the North Pole. On the top, you can see M and P, that is magnetic North Pole, जो arrow बनी हुई है. This one is the end-on position, जहाँ पे lines of forces vertical है, नीचे भी lines of forces vertical हैं. यहाँ पे lines of forces are parallel to the ground on equator. लास्ट क्लास में हमने ब्रॉड साइड पोजीशन और एंड ऑन पोजीशन के बारे में बार मैग्नेट में बात किया था या नहीं? Yes, sir. What is the relationship of magnetic field strength on the end on position and broadside Sir, position? it is double of broadside position on pole. So you can see the values written here. Broadside position में field strength of the earth is 24 ampere per meter approximately. And on end on position, south end में लिखा हुआ है जो, it is 48, double of that. तो पोल पे फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है और इक्वेटर पे फील्ड स्ट्रेंथ कम होता है. Then we have the black one, true meridian, joining the North Pole and South Pole, and we have the red line, which is imaginary line joining magnetic North Pole and magnetic South Pole, the red one. The angle between the two meridians are known as Variation. variation. Very good. This variation is different at different places. यहाँ पे देखेंगे तो variation कुछ अलग होगा. इस arrow head पे देखेंगे तो variation कुछ होगी. यहाँ पे देखेंगे तो कुछ होएगा. यहाँ पे देखेंगे तो कुछ अलग अलग होएगा. अलग अलग जगह पे ये वेरिएशन अलग अलग होती है. कैन यू इमेजिन कि ये अलग अलग क्यों होगा? सर एंगल ऑफ Can you imagine? अलग अलग लैटिट्यूड्स पे अलग अलग होगा, इसलिए अलग अलग लैटिट्यूड्स पे अलग अलग होगा और अलग अलग लॉन्गिट्यूड्स पे भी अलग अलग होगा. ऐसा क्यों? सर एंगल ऑफ डिप की वजह से अलग अलग लैटिट्यूड्स, लाइक अर्थ पे अलग अलग पोजीशंस पे एंगल ऑफ डिप अलग है, जिसके कारण वेरिएशन Dip- अलग अलग. डिप वर्टिकल प्लेन में होता है. डिप इज अबाउट ओनली दिस, वेरिएशन इज अबाउट दिस. एंगल हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो बनती है वो वेरिएशन है. वेरिएशन इज हॉरिजॉन्टल एंगल between this meridian and this meridian. Angle of dip is up and down. हॉरिजॉन्टल से बराबर या वर्टिकल या एंगल पे या ऊपर की तरफ, ये है डिप एंगल और ये है वेरिएशन दोनों मेरिडियन के बीच में. तो एंगल ऑफ डिप से फर्क नहीं पड़ता. मान सर, अगर लीजिए सर्कल पे कोई मान लीजिए कि यहाँ पे मैग्नेटिक पोल है, यहाँ पे ज्योग्राफिक पोल है, करेक्ट? तो Yes, sir. जो दो मेरिडियन होंगे वो ऐसे मैच करेंगे या नहीं? सो यहाँ पे ये जो एंगल बन रही है, ये एंगल विल बी वेरिएशन ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन. इन दोनों के बीच का एंगल
will be the variation. Is that correct? Yes, sir. रिमेंबर कि यहाँ पे जियोग्राफिक नॉर्थ है, यहाँ पे मैग्नेटिक नॉर्थ है। अब इसको इस साइड से देखिए, इस लॉन्गिट्यूड पे, तो ये वाला मेरिडियन यूं होगा, मैग्नेटिक मेरिडियन भी यूं होगा या नहीं? जियोग्राफिक नॉर्थ Yes, sir. से जो लाइन जा रही है वो भी ऐसे, और मैग्नेटिक से जा रही है वो भी ऐसे होगा या नहीं? कैन यू सी द वेरिएशन? यहाँ पे ये मैग्नेटिक पोल है, यहाँ पे ज्योग्राफिक पोल है या नहीं? हाँ ना, कुछ बोलोगे? Yes, आपकी sir. बात। तो इन दोनों के बीच का एंगल इज द वेरिएशन। इज दैट करेक्ट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन जो मेरिडियन यहां से जा रहा है, नहीं इधर नहीं, एक मेरिडियन, हाँ, ये मेरिडियन जो यहां से जा रहा है और जो मैग्नेटिक का जा रहा है, इन दोनों के बीच में एंगल, ये वाली मेरिडियन 0 degree, sir. 0 डिग्री हो गया। तो यहां से देखेंगे, इस लैटिट्यूड से, सॉरी इस लॉन्गिट्यूड से देखेंगे तो दोनों के बीच में एंगल है, लेकिन यहां से देखेंगे तो 0. 0 degree. नहीं है. यहां से देखेंगे, उसके ऑपोजिट से देखेंगे तो, नहीं रहेगा सर तब भी. और यहां से देखेंगे उल्टे साइड से, इधर से देखेंगे तो इधर भी सर कुछ एंगल रहेगा. अगेन Angle कुछ बनेगा एंगल सर. बनेगा। तो Yes, sir. अलग अलग लॉन्गिट्यूड्स पे अलग अलग वेरिएशन होगी या नहीं? व्हाट डू यू से? हाँ सर. होगा। So going to the slide once again. So अब ये क्लियर हो गया पिक्चर थोड़ा सा, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो? इज इट नाउ क्लियर? Next, definition of magnetic equator. How do we define magnetic equator? Definition. क्लियर है? Yes, sir. Okay, next. So same thing again understood here in the diagram. Repeat of the same thing what we have done. Re-verify your understanding. Read every letter on the screen. Make an image into your mind.
The points to notice here is that again the magnetic poles, the equator, the angle of dip. The angle of dip also is here, but it is 0 degree. It is also at the pole, but it is 90 degree. At south pole it is minus 90. At north pole it is plus 90. It is here also, it is said that on equator the angle of dip is nil, 0 degree. Is the situation clear? जी, ठीक है? Yes, sir. Clear है. Okay, good. Repeat again of what we have said. Next, angle of dip. Are we good? Gentlemen, are we good here? Yes, sir. Next. Now we are coming to more closer look at the angle of dip. How this is broken down into two components. As you can see here at the bottom, the angle of dip or the horizontal, this line is the total force that can be broken down in horizontal component parallel to the ground, and it can be broken down in vertical to the ground. So the T is broken down into H and Z. Read again. What we are saying, that here the lines of forces are in this direction, which can be broken down in two components. One component which is horizontal to the ground, which is H, and it can be broken down in another component which is vertical component Z with respect to the ground 90 degree. This is the T, which is Earth's magnetic lines of forces or total force of the Earth. We will see this in a closer look.
as you can see in the right side on the equator, how the freely suspended needle is located. Is it horizontal to the ground? The right side image. Is it Yes, sir. horizontal? Horizontal to the ground. Yes, sir. Why is it horizontal here? Sir, because the magnetic force of lines are parallel to Because it is the creating magnetic like lines. parallel to the surface. Exactly, So it is parallel to the giving symmetry. surface. And the two magnets are interacting, so they align themselves with each other. Why is it vertical here? Why is it vertical here? Magnetic force of lines. are Because equal to magnetic the field is perpendicular to the surface. Exactly. So naturally, if we suspend somewhere here, it will be making some kind of angle. If we suspend the magnet somewhere here, it will be making something like this. It won't be, sorry. It will be making an angle here. With respect to ground, it will be making some kind of angle. And this will be angle of dip. Sorry. On the left side, the magnetic needle will be above the ground. In the northern hemisphere, it will be below the ground. अगर सदर्न हेमिस्फीयर में है तो रेड पोल आसमान की तरफ देखता होएगा, ऊपर देखता होएगा. साउथ पोल, साउथ हेमिस्फीयर. अगर हम नॉर्थ हेमिस्फीयर में है तो रेड पोल विल बी लुकिंग इनटू द ग्राउंड. क्यों? क्योंकि we have already seen the lines of forces are like this. So the magnetic needle will be looking up into the ground, into the sky, and here it will be looking into the ground. North में towards the ground, in the south above the ground. कहानी पकड़ में आ रही है? Yes, sir. Good. Next. So in northern hemisphere, if we suspend a magnetic needle, it will look into the ground, which is T, and this can be broken down, of course, in H and Z. Z के चलते ये नीचे की तरफ जा रहा है, H के चलते इस डायरेक्शन में है. So T, the Earth's magnetic field strength, is broken down into two components, as we said, H and Z, as you can see written here.
So if this is T, then tell me the value of H and tell me the value of Z. जो ग्रीन में आप देख रहे हैं ये Z है, और जो आप ब्लू में देख रहे हैं फॉर एग्जांपल वो है H. एंगल इसके जो एंगल ऑफ डिप है दैट इज थीटा. तो H और Z की वैल्यू बताइए. Sir, H is T cos theta, Z is T sin theta. Very good. And that is what you are going to see in the next slide. H is T cos theta. Z is T sin theta. Z by H, of course, is tan theta or tan dip angle. Using Pythagoras theorem, hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. So T square is equal to H square plus Z square. Any doubt here? All this is clear? Yes, sir. Properties of H and properties of Z. H से क्या होता है? H is always working or acting towards the geographic or magnetic north pole. H is always going towards, remember these lines of forces are emanating from south pole and getting into the north pole, magnetic north pole. So H हमेशा point करता है किस तरफ को? Magnetic north की तरफ. और इसी डायरेक्टिव फोर्स के चलते, इसी H के चलते मैग्नेटिक निडल हमारा पॉइंट करता है किस तरफ? मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ. और इसी के लिए हम इसको बोलते हैं डायरेक्टिव फोर्स, क्योंकि यही डायरेक्ट करता है हमारे मैग्नेटिक निडल को टू पॉइंट टुवर्ड्स द मैग्नेटिक नॉर्थ. सर मैग्नेटिक नॉर्थ तो अपना साउदर्न हेमिस्फीयर में हुआ ना. मैग्नेटिक नॉर्थ साउदर्न हेमिस्फीयर में हुआ ना अर्थ के. नहीं, मैग्नेटिक नॉर्थ जो हम बोलते हैं, रिमेंबर व्हाट वी हैव सेड इज दैट अर्थ इज लाइक दिस. इसमें डाइपोल है जिसमें ब्लू पोल ऊपर की तरफ है और रेड पोल नीचे की तरफ है. करेक्ट? यस सर. जब हम एक निडल को सस्पेंड करते हैं तो उसका रेड एंड इस तरफ को दिखाता है, ब्लू की तरफ. और इसी के लिए हम इस रेड को नॉर्थ बोलते हैं. तो इसका नॉर्थ पोल तो यहाँ है, बट हम मैग्नेटिक नॉर्थ पोल किसको बोलते हैं? जो अपना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ज्योग्राफिक नॉर्थ के बगल में जो है. हाँ. तो ब्लू पोल तो है यहाँ बहुत अच्छे, लेकिन फिर भी हम इस एरिया को मैग्नेटिक नॉर्थ पोल बोलते हैं क्योंकि वो ज्योग्राफिक नॉर्थ के साथ में लगा हुआ है. ओके. सर. तो H की वैल्यू इज मैक्सिमम एट द इक्वेटर, क्योंकि वहां Z की वैल्यू 0 हो जाती है. एंगल ऑफ डिप इज 0, मतलब Z 0. सो मैक्सिमम H इज देयर एट द इक्वेटर. और जब हम पोल पे जाते हैं तो मैग्नेटिक निडल वर्टिकल हो जाता है, मतलब सब Z ही है, और H 0 हो जाता है. सो H इज 0. क्या कहाँ चला गया? हाँ,
H is 0 at the poles and maximum at the equator. इसके ऊपर वाली लाइन हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा. Just taking 1 minute more to complete the properties of Z. Z is downwards in the north hemisphere, upwards in the south hemisphere, और इसी के लिए magnetic needle is pointing towards the sky in the southern hemisphere and into the ground in northern hemisphere. So we call this positive in the northern hemisphere and negative in southern hemisphere. जो +90 और -90 हो गया था at poles. इन दोनों को मिला के देखिए, Z से कंपास निडल टिल्ट होता है, ऊपर नीचे होता है वर्टिकल में, ईस्ट वेस्ट में मूव करके, और डायरेक्टिव प्रॉपर्टी में ऐड नहीं करता, डायरेक्शन बताने में ये ऐड नहीं करता, ये सिर्फ ऊपर नीचे करता है मैग्नेटिक निडल को. अगेन we will talk about this later, but this can very well be understood now by you. At equator Z की वैल्यू 0 हो जाती है और मैक्सिमम हो जाता है at poles. क्यों? क्योंकि एक यहाँ पे Z 0 है, सारा का सारा H है, और यहाँ पे जब आते हैं तो सारा का सारा Z है, H is 0. उल्टा होता है to what H was having. H was maximum equator, minimum और 0 at poles. टाइम हो गया. हाँ, बस ये इसीलिए मैंने कहा कि बस 1 मिनट लेके इसको खत्म करते हैं. Z is maximum at poles, 0 at equator. उल्टा of H. So these are the properties of H and Z. So we'll talk more about this in the next class. Okay, thank you, sir. Yes, Thank but you, have sir. you studied before coming to the Thank you, class? sir. जो मैंने आपको कहा था थोड़ा पढ़ के आना, नहीं पढ़ा. चलो, ओके, नो प्रॉब्लम. अगली क्लास में थोड़ा सा देख के आइएगा, तो फिर से मैं एडवाइस कर रहा हूँ, प्लीज रीड एंड कम. चलो, बाय बाय. Okay, thank you, हैव अ sir. ग्रेट डे. साइनिंग ऑफ. बाय बाय. Thank you, sir. Bye, sir. बाय बाय. बाय बाय.